बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to add page navigation. Today we are going to add page navigation option in list menu under navigation tab इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से पेज नेविगेशन के ऑप्शन को लिस्ट के मेन्यू में, जो कि नेविगेशन के टैब के अंदर होता है, उसको ऐड किया जाता है। So the result will look like this. जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। When you select list from type drop down, जब आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे टाइप ड्रॉप डाउन में से under identification, then page navigation option will be available from list drop down under source। तो पेज नेविगेशन का ऑप्शन लिस्ट के ड्रॉप डाउन में से लिस्ट के ड्रॉप डाउन में मौजूद होगा सोर्स की हेडिंग के अंदर। और furthermore, when you come to share components, जब आप share components में आएंगे, come to list under navigation, list navigation में आएंगे तो so page navigation option will be available here as well। पेज नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होगा। So now after signing to the workspace, click on app builder। workspace पे साइन होने के बाद app builder पे क्लिक करें। come to application apex 21.2, application apex 21.2 पे क्लिक कर लें। Right now the condition look like this। अभी जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की है। When we select list, जब हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं टाइप ड्रॉप डाउन में से, तो पेज नेविगेशन यहाँ पे नहीं आता। So पेज नेविगेशन ऑप्शन is not appearing। Now click on shared components। shared components पे क्लिक करेंगे। explore list ऑप्शन अंडर नेविगेशन, लिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे नेविगेशन में। Now hit create बटन, create का बटन दबाएंगे। Now option will be from scratch, hit next बटन। ऑप्शन जो है from scratch रहेगा, next का बटन दबाएं। Now name will be page navigation, type is static and we cannot select anything from build option drop down and hit next बटन। नाम जो है वो पेज नेविगेशन रहेगा, टाइप जो है वो स्टैटिक रहेगी और बिल्ड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में से हम कुछ नहीं मुंतखब करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएं। Now we will not provide anything to list entry label and target page ID or custom URL and we will hit next button। You can define it from your choice if you want। हम लिस्ट एंट्री लेबल और टारगेट पेज ID और कस्टम URL को कुछ नहीं मुहैया करेंगे। आप अगर कुछ मुहैया करना चाहते हैं तो कर दें, नेक्स्ट का बटन दबाएं। Now do not create list regions from create list regions drop down and hit create list बटन। अब हम ऑप्शन जो है वो do not create list regions रहेगा create list regions के ड्रॉप डाउन में और create list का बटन दबाएंगे। So now the page navigation option is available here in list menu। अब यहाँ पे page navigation menu आ गया है लिस्ट के मेन्यू में। And when we will create a region on a specific page, जब हम region बनाएंगे किसी भी specific page में, and we will select list from type drop down
under identification. Now we are able to select page navigation from list drop down under source. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.